dealing with the ICE Pakistan HND department since 2 years, and he's also an instructor here. So let's get into it. Hi, how are you, Sarans? I'm good, Mashiza. How are you? I'm good too. So let's just get into it. I think our audiences wants to know about HND program. So if you would talk about HND program and discuss it with in comparison to our local degrees, how would you describe it? Well, अगर मैं एक ओवरव्यू के अंदर बात करना शुरू करूँ, just an overview of a bachelor's compared to what an HN or a higher national graduation or a higher national diploma is. So, higher national traditionally was set up to help those people who are looking for employment or are already employed do not want to complete their bachelor's and want to do a slow-paced graduation degree. So they want to do a degree, they want to complete their education, but at the same time they want to work. Uh, so in Pakistan, we have this culture of studying till like you're 24, studying till you're 27, and then you understand that okay, now I have to go get a job. लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता. We know that, right? बाहर 18 साल की उम्र में you're thrown out in the world. जाओ काम ढूंढो, move out, find your own place, find your own work. हाँ, that's not practical in Pakistan because बाहर वो चीज़ें होती हैं कि a person going out after 18 years, 16 years of education, sorry, 12 years of education can actually find work. लेकिन पाकिस्तान में वो नहीं होता. That's not the same case, right? तो ये qualification generally उनके लिए बनी थी. अब अगर मैं इसको बैचलर से कंपेयर करूँ और मैं बताऊँ कि इसका फ़ायदा क्या होगा, the typical bachelor's is a 4-year program. You get a 16 years of education equivalence after completing your bachelor's. In an H&D, अगर मैं diploma तक की बात करूँ, so H&D is a diploma which is half of their complete qualification. Uh, a complete bachelor's in UK is 360 ECTS, which are the credits. अगर हम उसको drop down करें to 240, 240 becomes an undergraduate diploma. फर्दर अगर उसको भी 120 पे ड्रॉप डाउन करें दैट बिकम्स अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन. तो बाहर इस तरह लेवल्स बने हुए हैं. लेवल 3 इज द सर्टिफिकेशन, लेवल 4 इज योर डिप्लोमा, लेवल 5 सॉरी लेवल 4 इज योर सर्टिफिकेशन, लेवल 5 इज योर डिप्लोमा, लेवल 6 इज योर कंप्लीट अंडर ग्रेजुएट डिग्री. तो वहाँ पे at any point, even after level 3, level 4, you can get employed. And level 6 is even exempted in most cases due to experience. कहते हैं अच्छा इसने इतने साल पढ़ लिया, अब इसके साथ इसका इतना एक्सपीरियंस भी है, why does he need to study this then? ठीक है, वो लेवल 6 एग्जाम करके जैसे कि ओके यू कैन मूव ऑन टू लेवल 7 और मास्टर्स प्रोग्राम. मीनवाइल पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर वो टिपिकल 4 साल अगर आपने पूरे ना किए तो आपको अभी डिग्री नहीं मिलेगी. So you have to complete those. So एक तो ये edge है कि it's a foreign qualification. I know it's kind of new to people here, लेकिन होनी नहीं चाहिए क्योंकि HN भी काफ़ी देर से पाकिस्तान में रन हो रहा है. बट एट द सेम टाइम अगर बैचलर्स 4 ईयर बैचलर्स कर रहे हैं और यहाँ आप 2 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं, अगर मैं स्किल्स वर्थ की बात करूं तो यू कैन कंपेयर दोज टू. और अगर आप टॉपअप की बात कर रहे हैं तो टॉपअप जस्ट एक्सीड्स द लोकल बैचलर्स. 4 साल लगा के 16 साल की एजुकेशन यू गेट अ लोकल बैचलर्स. मीन वाइल 3 ईयर्स यू गेट कंप्लीट योर अंडर ग्रेजुएट, यू गेट अ फॉरेन क्वालिफिकेशन. तो उधर तो कंपैरिजन आता ही नहीं है. एक नॉर्मल एचएन का डिप्लोमा का मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ बैचलर से. So that's my like an ठीक है. overview of analysis of HN compared to a local ठीक है. bachelor's. So to sum it up, it basically is more fast tracked and skill based. Yep, exactly. Okay. So my next question for you is, what are the key aspects of agent computing? If you like summarize it for our audiences. Well, again, starting off, comparing it with a bachelor's, you study a bachelor's, you do your bachelor's in computer science, you do a bachelor's in software engineering, betarjih fields, right? What are the key subjects that you study? Programming, simple introduction to programming, data structures, object-oriented programming, API development, backend development. Those are the key subjects that you study. Now, what are the preliminaries that you study? Park studies, Islamiyat, technical report writing, economics,
in some cases even, that's not directly related to computing, right? अगर मैं computing में TRW को डालूँ, yes it makes sense because you will need technical report writing skills, but path studies को मैं नहीं डाल सकता. Even in the preliminaries की भी बात करूँ, तो कुछ हैं जो इसके साथ मैच होते हैं, कुछ हैं जो completely मैच ही नहीं होते, right? तो एच इन कंप्यूटिंग के अगर मैं सब्जेक्ट्स को देखूं या एच इन कंप्यूटिंग के अगर मैं कंप्लीट ब्रीफली उसके स्ट्रक्चर को देखूं, तो उसके अंदर प्रिलिमिनरीज नो डाउट हैं, लेकिन अगेन वो प्रिलिमिनरीज भी मैप आउट होते हैं कंप्यूटिंग के साथ. इट्स नॉट लाइक दे डोंट मैप आउट एट ऑल, जिस तरह हमारे इस्लामियात हो गया, जो कि विच इज आई डोंट नो इफ यू नो बट इट्स आल्सो मैंडेटरी फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स एज वेल. या. Yes. Okay, so moving on to our next question. What do you think are the key prospects of agent computing? For instance, a kid or a student who wants to enroll into agent computing, what are the options? What are the opportunities? How will the doors open for a student who wants to enroll in agent computing? अच्छा, before I get into that, I will थोड़ा सा और elaborate करना चाहूँगा about the differences. So I said some subjects, right? तो अगर आप एक HND करते हैं computing के अंदर, first semester you come in, you study programming, you study networking, you study professional practices, and you study security, right? Professional practices, again, जिस तरह मैं कह रहा था, preliminary subjects में से एक है. But professional practices, what it does is कि आपको presentation कैसे बनानी है, आपको report writing कैसे करनी है, आपको Gantt charts कैसे बनाना है, आपको event कैसे manage करना है. It gives you all of that, right? वो एक computing graduate के भी इतनी ज़रूरत है जितने business graduate की ज़रूरत है. ठीक है? You move on to your next subject, right? अगले semester में आप जाते हैं. You study managing a successful computing project. You study software development life cycle. You study maths for computing, or you might be studying data structures and algorithms. Again, technical subjects सारे complete हो रहे हैं. Meanwhile, technical subjects के साथ साथ you have the computing research project. Now, एक हमारे bachelors में जो बहुत lacking चीज़ है ना, वो research है. हम हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट है ना पाकिस्तान के एजुकेशन का, इट रिवॉल्व्स अराउंड, अच्छा रिसर्च तो मास्टर्स में होती है, पीएचडी में होती है, बैचलर्स में कहाँ, राइट? बट लेकिन जब आप दुनिया को देखते हैं ना, दे आर नॉट डूइंग रिसर्च एट अ बैचलर, वो एट अ मास्टर्स लेवल और पीएचडी लेवल. रिसर्च शुरू होती है उनके बैचलर से, बिकॉज उनके यहाँ बैचलर्स वो नहीं करता वो बंदा जो टिपिकल 9 to 5 जॉब करना चाहता है. अगर कोई 9 to 5 जॉब करना चाहता है, ही कैन गो इनटू द मार्केट आफ्टर हिज एफएससी कंप्लीट्स. वो तभी जाके अपनी जॉब ले सकता है, मार्केट में अपनी नाम बना सकता है, एंड ही कैन वर्क. बट द एकेडमिक क्वालिफिकेशंस देयर आर फॉर द पीपल हु एक्चुअली वांट दैट. ठीक है? तो वहाँ पे ये पॉइंट आता है कि ऑफन टाइम्स हम लोग अपने बैचलर्स के अंदर ये रिसर्च वाला पार्ट इनकॉर्पोरेट नहीं करते. बट HN के अंदर ये हुआ हुआ है, because HN is completely assignment based, right? It's assessment based. You don't actually give exams. आपका memory test नहीं हो रहा कि आपने ये फॉर्मूला याद किया या नहीं किया. वो आपका actual application test ले रहा है कि अच्छा ये चीज़ आपने पढ़ी थी, आपको अप्लाई करनी आती है या नहीं आती है. ठीक है? तो अगर मैं उस एस्पेक्ट से देखूं, कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट, मीनवाइल यू गो थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, उसके अंदर भी रिसर्च प्रोजेक्ट आ जाता है आपका, विच इज लाइक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, दैट्स डबल क्रेडिट्स आल्सो. तो वो रिसर्च प्रोजेक्ट का यूनिट आ जाता है. मीनवाइल आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पढ़ रहे हैं, तो आप सारे वो की एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो आप एक बैचलर के अंदर देखेंगे. जो बैचलर के अंदर एक एक सब्जेक्ट उसकी ज़रूरत है वो सारे पूरे हो रहे होंगे. एट द सेम टाइम आपके वो वाले सब्जेक्ट्स भी पूरे हो रहे हैं जो आपको रिसर्च में और एक्चुअल जॉब मार्केट में हेल्प करेंगे. बट वो वाले सब्जेक्ट्स ड्रॉप आउट हो रहे हैं विच आर जस्ट क्या कह सकते हैं, एंशिएंट पॉलिसीज हैं हमारी कि ये पढ़ाना है, बस पढ़ाना है, तो अपने वो आवर्स पूरे करने के लिए डाला. सो एजेंट कंप्यूटिंग के अगर आपने प्रोस्पेक्ट का जो सवाल किया, HN computing का बच्चा, when he completes his higher national qualification, he can go for a top-up, which is basically a I mean it's something जो मैं एक लोकल बंदे को समझाऊं तो वो बोलेगा how is this happening, right? आप 2 साल HND करते हो, हायर नेशनल डिप्लोमा करते हो, आपको 14 years की इक्विवेलेंस कहता है HEC. Okay, you have done an associate qualification, you have done an associate degree, you have 14 years of education. ठीक है?
तीसरा साल आप टॉप अप करते हो, एचईसी ऑटोमेटिकली सेज ओके यू नाउ बैचलर्स, यू नाउ एन अंडर ग्रेजुएट, एंड नॉट ओनली दैट कि आप एक अंडर ग्रेजुएट हो, यू आर फॉर एन अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपकी डिग्री पाकिस्तान की नहीं, आपकी डिग्री बाहर की है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी डिग्री 3 साल में कंप्लीट हुई है, डजेंट मैटर, आपकी डिग्री ये यहाँ के 4 साल वाले बैचलर्स के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो एक ये प्रोस्पेक्ट होता है उसके पास। दूसरा ये है कि फाइनल ईयर इज मोर लाइक अ स्पेशलाइजेशन ईयर, राइट। आप एच एंड डी के अंदर व्हेन यू कंप्लीट योर फर्स्ट 2 years यू आर मोर देन केपेबल टू कंपेयर योरसेल्फ और compete a person who has done a bachelor's. The final year is just like putting you over the top. उनके ऊपर रख देंगे। I mean, you're from GKey, right? How would you compare someone who has done a qualification from GKey and compare them to like let's say Punjab, who has done a qualification from Punjab? अगर आप इन दोनों को compare करें, you would I think. automatically get into which के यार GKey का है, right? Yeah. आपको वो एस्पेक्ट पता लग जाएगा, अच्छा इसका सोशल सर्कल थोड़ा बड़ा होगा, इसके कनेक्शंस बने हुए होंगे। मीनवाइल अगर Soft वहां से skills कोई ज़्यादा बच्चा जो है वो डेवलप्ड। एग्जैक्टली उसके स्किल्स मतलब सोशल स्किल्स डेवलप्ड हैं। मीनवाइल अगर आप किसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का नाम लेते हैं, वहां से कोई बच्चा ग्रेजुएट होकर आ रहा हो, तो यू कैन ऑटोमेटिकली से ओके मे बी ही इज इंटेलेक्चुअली साउंड, लेकिन उसके सोशल स्किल्स के ऊपर डेवलपमेंट चाहिए होगी, इसको जॉब कल्चर का पता होना पड़ेगा और ये सारा कुछ होना पड़ेगा। सो दैट्स वेयर योर एडवांटेज कम्स इन। आपने की एचएन, आपने किया एक पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट से, आपने टॉप अप बाहर से किया, बट यू हैव अ डिग्री दैट सेज नहीं इसका सोशल सर्कल बड़ा है, नहीं इसको कनेक्शन बनाने आते हैं, ही इज डन अ फॉरेन क्वालिफिकेशन, उसको अंग्रेजी भी आती है। सो यू नो वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली बिल्डअप होके वो एचएन मतलब जब आप अपना टॉप अप करते हो दैट पुट्स यू ओवर द टॉप। बैचलर्स आपका नीचे रह जाता है, आप ऊपर चले जाते हो। अगर मैं बैचलर्स को कंपेयर करूंगा, अगेन वो डिप्लोमा के साथ कंपेयर कर रहा हूँ मैं हायर नेशनल्स के। सो दैट एडवांटेज, ऊपर से आपका ये वाला एडवांटेज हो गया कि आपका सोशल सर्कल बना हुआ है। फर्दर अगर आप स्पेशलाइजेशन ईयर के अंदर जाके कोई स्पेसिफिक फील्ड उठाना चाहते हो, दैट्स वेरी नाइस कि अगर आप चाह रहे हो कि ऐसा मैंने ये निश में जाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक निश का नाम लूँ आजकल साइबर सिक्योरिटी, राइट, दैट्स अ निश। अगर आपने उसे फॉलो करना है जैसे कि अच्छा मैं टॉप अप कर रहा हूँ फलानी यूनिवर्सिटी से, इसका साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, मैं इस पर टॉप अप करूँ, राइट। if you do that you maintain your niche और आपकी वहाँ पे मार्केट बनती रहेगी। meanwhile the best suited option that I suggest to students is keep it general। ठीक है, अपने ऑप्शंस ओपन रखो, अपनी यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस ओपन रखो, जनरल के अंदर आप जाओ, टॉप अप अगर आप करते हो दैट्स वेल एंड गुड, अगर आप नहीं भी करते हो तो a diploma in a general is worth way more than a specialized field। क्यों? जनरल के अंदर you have studied a bit of everything, right? And in स्पेशलाइजेशन कोर्स आपको बेसिक सब्जेक्ट्स तो वही पढ़ाए जाते हैं, बट स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स के अंदर यू स्टडी वन स्ट्रीम लाइन ओनली। अब वहाँ पे ना कि आपकी जॉब मार्केट थोड़ी सी कंजेस्ट हो रही है, आपकी टॉप अप ऑप्शंस भी कंजेस्ट हो रही हैं, आपकी बैचलर्स ऑप्शन भी कंजेस्ट हो रही हैं, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि जनरल पे रहो। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट एडवांटेज आपको ये होता है कि अगर मैं एक नॉर्मल अंडर ग्रेजुएट अपने पाकिस्तान के ग्रेजुएट की बात करूँ, यू स्टार्ट learning when you join your bachelor's, but आपको skills या आपको implementation तब तक नहीं आती जब तक आप जॉब नहीं शुरू करते हो। आपको implementation उस चीज़ की तब आना शुरू करती है when you start working, right? तो that's your second advantage in H&D कि आपको वैसे तो implementation related task ही करवाए जा रहे हैं। दूसरा ये है कि H&D के अंदर जब आप general पढ़ लेते हो, you go into the market, you get a job, आपने general किया हुआ था, you get a taste of the field, you like it you pursue it, you don't like it you change your field। ठीक है, तो आपको जब एक्चुअल मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं कि थ्योरेटिकल तो बहुत अच्छी लग रही होती है, जिस तरह इंट्रोवर्ट्स के मसले होते हैं, थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, ऐसे सैटरडे को जाएंगे दोस्तों से मिलेंगे, सैटरडे को जब एक्चुअली आते हैं तो फिर कहते हैं यार बेड से नहीं निकलना। सो वही वाली चीज़ है कि थ्योरेटिकल तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक पता नहीं लगेगा कि इज दिस वेयर यू वांट टू बी। So that's your biggest advantage in HN। Okay, so basically, HN itself will groom the student to the point where you are ready to go into the market and you have the required skills. You just need to implement it and see if it works out for you, and it also keeps the options open for you if you want to switch your lane a little bit. Perfectly summed up, yep, exactly।
Okay. So I think most of our students would want to know what is the pathways that they can choose. What are the pathways that they can go towards? किस किस फील्ड में जो है एजेंट कंप्यूटिंग को वो यूज कर सकते हैं एज अ पाथवे. Right. So now, if I talk about the Pearson Higher National Pathways, there are multiple ones. There is software engineering, there's the general group, then there is the AI and deep learning, machine learning group, then there is the data science group, then there is data analytics. There are multiple different ones. There is security, cybersecurity is there, networking is there. So there are multiple fields that they can go into even after completing their exam. जैसे कि मैंने आपको subjects के नाम बताना शुरू किए थे. From first semester, you can tell you're studying three subjects from three different streamlines. You're studying networking, security, and programming. They're both different fields. I mean, हाँ थोड़ा बहुत linkage होता है, but अगर उसके core aspect पे अगर आप जाएं तो वो तीनों different fields कहलाती हैं. राइट. तो एक तो वो है कि आपको मिक्स एंड मैच करके एक तो अपना एक पाथवे चूज कर लो, तो यू स्टडी दैट पाथवे ओनली. अगर आप जनरल रखते हो तो यू स्टडी, यू गेट अ टेस्ट ऑफ एवरीथिंग, राइट. और जिस तरह आपने बात की कि एक इंस्टीट्यूट आई एच एन बच्चे को ग्रूम करता है, एक्चुअली एक इंस्टीट्यूट बच्चे को ग्रूम करता है. जस्ट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट, राइट. काफ़ी सारे होते हैं वो अंडर ग्रेजुएट शुरू करते हैं, देयर इन देयर एक्सप्लोरेटरी फेज कि मैंने क्या करना क्या है, मैंने बनना क्या है, right. And most of us, even me myself being an engineer, most of us are in their qualification or in their field because बाबा ने कहा था, मम्मा ने कहा था ये बनना है, ये बनेगा मेरा बच्चा, ये होगा. तो दैट्स द सिनेरियो इन पाकिस्तान. तो एचएन के अंदर you have multiple different pathways. You can pick and choose whichever you want. Again, a personal opinion would be keep it as general as possible, so you keep your options open as long as you can. But if you have found your spark, if you know where you want to be, just follow that. Okay. That was super informative. I think our audiences would have understood a lot from this session. We would just like to close the session with any advice that you would want to give students who want to pursue computing as their bachelor's or as a subject, how they want to do something in computing. So, my advice right now would be that there are certain aspects of life that are no longer, and there are certain aspects of business or even our society that are no longer going to be there. कुछ चीजें, कुछ professions even are gonna get extinct. They're gonna get replaced. And what are they gonna get replaced by? Probably machines and computers, right? Yeah, Uh, कुछ ऐसे professions are still there that are not yet automated and cannot be automated. जिस तरह healthcare is one of the sectors, but even you and I know कि आजकल भी even in the course of this pandemic, there was a digital surgery performed. The person was sitting at his home using robot hands to perform a surgery, right? So ऐसा नहीं है कि उस मार्केट में भी टैप नहीं कर रही कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग उस मार्केट को भी टैप कर रही है. लेकिन along मतलब in your entire globe आपका हर बिजनेस इफेक्ट हो चुका है कंप्यूटिंग से. और मतलब आपकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप पहले, इफ़ आई टेक योर एग्जांपल फॉर एग्जांपल, व्हाट डिड यू यूज टू डू? ईद से पहले चांद रात का वेट होता था, या 2-3 दिन पहले रातों का वेट होता था, छुट्टियां मिलेंगी, वील गो टू द मॉल्स, वील गो डू शॉपिंग और ये तो वो. अब क्या हो रहा होता है, अब तो ईद से महीना पहले ही बंदा वेबसाइट खोल के बैठा होता है, अच्छा ये वाली रिलीज हुई है, ये वाला जोड़ा रिलीज हो रहा है, ये वाला ड्रेस रिलीज हो रहा है. सो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दैट, ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू वोंट इवन गो आउट एनी मोर फॉर दैट. आई मीन अदर पर्पसेस, श्योर उसके लिए आप शायद फिर भी ना जाओ, आप ऑनलाइन ही ऑर्डर करो और ऑनलाइन ही आपके घर पे आके आए. सिमिलर विद अ लॉट ऑफ सर्विसेज, your banking, your आपकी ये business हो गए, everything is affected by this. So this is a still open market, and this is becoming a necessity now. Like healthcare, this is now becoming a necessity. Everybody has a phone, everybody has a laptop. This is going to be uh, the thing that carries on. Okay, thank you so much, Sir Ans. We understood a lot from this session. It was super informative.
And I'm sure our audience got to learn a lot about Asian computing and the prospect that it opens up for them and the opportunities that come with. Thank you so much. Thank you so much.